गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर फाइन। इससे पिछली वीडियो में हमने रिलेटिव वेलोसिटी करी थी। अभी और रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ करने हैं और उसमें बेसिकली हम पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम इफ दे आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल थीटा then what could be the relative velocity that we are trying to find. So let's find this. In this we see that we assume that we have two objects VA and having velocities VA and VB, and they are going at certain angle theta. Let's say objects are P and Q or body A and B. So if we superimpose VB over here, then this will be the resultant of these two, which is VA and VB. That will be VAB, relative velocity of A with respect to B. Now if you apply the basic formula, then from parallelogram OQRP dash, we have parallelogram OQRP dash. We can write VAB as VA square plus VB square plus 2 VA VB, and angle between them is cos 180 degree minus theta, and then it will be whole under root. Since cos 180 minus theta is minus cos theta, and therefore we write this VAB as VA square plus VB square. This minus comes here, so we write VA VB cos theta. Under root remains as it is. So this becomes the resultant of this two. Let's say equation 1. Now suppose beta is the angle made by resultant. A resultant vector. Then we may write tan beta as perpendicular by base. So perpendicular is this side will be VV sine 180 minus theta divided by A plus B, means VA plus VB cos 180 minus theta. So this becomes the direction of resultant. Obviously, if you want the angle beta, then it will be tan inverse of this, which is VB sine 180 minus theta whole divided by VA plus VB cos 180 minus theta. So this is the direction of the resultant. Now if you apply some cases or a special case, then we get this as so special case. So in special case, we don't need to think anything else. In equation 1 and 2, let's say theta is 0 degree. And since you know
Sine 0 is 0 and cos 0 is 1. Then equation 1 and 2 becomes. So we merely put the value of this cos theta and thus we write. So VAB would be what? VA square plus VB square minus 2VABV cos 0 whole under root. Thus, this part will go because cos 0 is 1. So it can be A minus B whole square. So VA minus VB whole square whole under root. And so it can be VA minus VB. So this becomes the case of what we do when the objects are going in the same direction because angle theta is 0. Same case that we did straight line motion kind. Similarly, if we apply this value over here in second equation, then what could be this tan beta? Tan beta. It will be VV sine 180 minus theta. So accordingly, by putting, we can find the values. Better we take now the second case as this. When angle between them, they are going on at the parallel track, means theta is 180 and cos 180, we know minus 1. So equation 1 becomes VAB as VA square plus VB square, and this will be plus 2VA VB whole under root. And so it becomes VA plus VB whole square whole under root. And thus it is VA plus VB. What we have done when the objects are going in opposite direction. So this happens. Now, if you apply this in numericals, then what we find? Let us see. Like we have numericals. So first is two trains A and B of length 400 meter are moving with VA and VB with 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. A आगे है B से
The driver of B, sorry, decides to overtake A. Decides to overtake A, having acceleration 1 meter per second square. So if after 50 seconds B crosses A, then what was original distance? S, original distance between them, means between A and B, right? इसको हमने कैसे करना है? तो ये करने के लिए हम, और इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे है और कहाँ है, ये भी सीखना है। फॉर्मूला तो बाय एंड लार्ज एक बार देखने से आ जाती है, लेकिन जब तक न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आती है कि हम फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें। तो ये करने के लिए हमने सबसे पहले लिखना है कि दिया हुआ क्या क्या चीज है। गिवन है कि VA इज इक्वल टू VV इज 72 किलोमीटर पर आवर। इसको लेट्स कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18, so 18 4 is 72, 4 means 20 meter per second. Time given is 50 second, and acceleration of B is 1 meter per second square. Then original distance we are told to find. तो हमारे पास डिस्टेंस के लिए तो एक ही है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन इस U में हमें थोड़ा सा सोचना है कि U क्या, तो U ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो अगर हम फाइंड करें, ये दो ट्रेन थी हमारी A और ये थी B, तो A थोड़ी आगे जा रही थी B से, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में है, तो VBA वुड बी VB माइनस VA। स्पीड तो सेम है, 72 लिखे या 20 लिखे एक ही बात है, तो 20 माइनस 20 0, so relative velocity of each is 0, which means 0 into time reference given is 50, so let's multiply it by 50, plus half acceleration is A and time square is 50 into 50. So if we solve, we get it as 225. 25 into 5 is 125. So S becomes 1250 meter. This was the original distance. तो हमने relative velocity concept कहाँ पे अप्लाई किया? यहाँ पे relative velocity of B with respect to A, क्योंकि B कोशिश कर रहा है A के acceleration से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन की A को क्रॉस करना, ओरिजिनली A आगे है, तो ये रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व कर दिया। होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट्स सी सेकंड। सेकंड इज डायग्राम से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल लिखने में टाइम बहुत जाता है। ऑन अ 2-lane रोड वी हैव 3 cars. 1, 2, and let's say this is 3, third car. This is A, and this is B, and this is C. Then we are also told
this A is going in this direction, but B and C are opposite of each other. This A is going with 36 km per hour, and these two having velocities 54 km per hour. Obviously not going on same line, 2-lane road. If original distance between them, either between AB or AC, is 1000 meter, then driver of A, B decides to overtake A, this B. Now B is trying to overtake A before C does. C से पहले. What minimum acceleration of the car B is required to avoid the collision? तो हमें इस कार B की एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि C के साथ कोलाइड ना करे, क्योंकि दोनों की सेम स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन से, तो थोड़ी फास्ट चलनी पड़ेगी. अब जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था वैसे यहां अगर हम लिखें कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन में VA 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके. 18 2 जा 36, 10 मीटर पर सेकेंड. और वेलोसिटी तो B और C की सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, which is 54. 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए हमें, डिस्टेंस गिवन है 1000 मीटर. तो ये हमारे पास एक क्लू है. अब B ने डिसाइड कर लिया, C को तो कुछ पता नहीं चला, तो टाइम हमें ये क्लू है कि हाउ मच टाइम C will taken by C to क्रॉस. एक्चुअली क्रॉस कितनी करनी है, 1000 मीटर. तो टाइम के लिए बेसिकली हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस तो 1000 है, बट स्पीड जो होगी, ये A भी तो इधर आ रही है और ये भी इधर जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C with respect to A means S is 1000 and this will be VC plus VA, which is 1000 upon, this is going with 15 meter per second and this is coming with 10. So 15 plus 10, 25. So therefore time is now 1000 divided by 25. 25 4 जा 100, 40 seconds. ये टाइम हमें एक क्लू आ गई, मतलब थोड़ा स्लाइटली बिफोर 40 सेकेंड B मस्ट ओवरटेक A so as to avoid collision. तो स्लाइटली मतलब 39.99 सेकेंड, एक्चुअली 40 ही लेते हैं कैलकुलेशन में. अब तो फॉर्मूला तो डिस्टेंस के लिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास, SUT प्लस हाफ AT². तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला विल अप्लाई and then we'll be able to find the answer. So let's write this. S is equal to UT plus half AT². Now S is 1000. When how much is U means a relative velocity of this U basically is what? Relative velocity of B. किससे क्रॉस करना है इनको, तो A के रेस्पेक्ट में इट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो VBA और UBA बिकॉज दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो VB minus VA which is 15 minus 10, so 5 meter per second. So this is 5 and time we have taken which is 40 plus half
A we have to find, and T is given, which is 40. If we solve, what we get? 1000 is 200. If we solve, this is 20, 20A. Sorry, 40 into 14. So it is 800A. So 200 plus 800A. And therefore, 800A could be this 1000, this 200 will come in LHS. So it will give us 800 value. And therefore, A becomes 800 upon 800. And thus we get value which is 1 meter per second square. So acceleration of the car B must be 1 meter per second square. So hope I am able to convey. Thank you so much. May God bless you. Don't forget to hit like button, share it with your friends, and do comment. May God bless.